A very good morning, all dear students. Myself, Praveen Tailani, Associate Professor, SIT Science Pharmacy Bhopal, welcomes you all on the behalf of SAGE Group of Institutions. So, as in the last lecture, we have studied about the topic that is mixing. So, continuing with the same topic, today is the second lecture of the same topic. So, let's start with a quick revision. तो मिक्सिंग क्या होती है? मिक्सिंग इज एन ऑपरेशन इन विच टू और मोर कंपोनेंट्स in a separate or roughly mixed condition are treated so that each particle lies as nearly as possible in contact with a particle of each other ingredients. मिक्सिंग मैंने आपको बताया था दो टाइप की होती है, पहली होती है आइडियल और परफेक्ट मिक्सिंग एंड सेकंड इज रैंडम मिक्सिंग. Then we have studied about different uh, segregations हमने पढ़े थे. Objectives of mixing we have studied in the last lecture. नीड क्या है मिक्सिंग की? तो जैसा कि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो जब भी हम कोई डोसेज फॉर्म फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं, तो मिक्सिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. टाइप्स ऑफ मिक्सिंग हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में. पॉजिटिव मिक्सिंग दैट रिक्वायर्स नो एनर्जी, नेगेटिव मिक्सिंग जिसमें एनर्जी रिक्वायर्स होती है, एंड देयर कम न्यूट्रल मिक्सिंग. ओके. टाइप्स ऑफ मिक्सिंग में लिक्विड मिक्सिंग होती है, पाउडर मिक्सिंग होती है जिसे हम फ्लूइड मिक्सिंग या सॉलिड मिक्सिंग भी कहते हैं, देयर इज अ सेमी सॉलिड मिक्सिंग. फिर हमने इनके बारे में पढ़ा था कि प्लास्टिक फ्लो, स्यूडो प्लास्टिक फ्लो. मैकेनिज्म मिक्सिंग में हमने चार टाइप के मैकेनिज्म देखे हैं. पहला है बल्क ट्रांसपोर्ट मिक्सिंग, टर्बुलेंट मिक्सिंग, लेमिनार मिक्सिंग एंड मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन. बल्क ट्रांसपोर्ट, टर्बुलेंट मिक्सिंग, लेमिनार मिक्सिंग एंड मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, ये हम सब लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं. सो कंटिन्यूइंग विद द लास्ट लेक्चर, आज मैं आपसे बात करूंगा प्रोपेलर मिक्सर की. सो व्हाट इज अ प्रोपेलर मिक्सर? इसका जब हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ एंगल ब्लेड्स अटैच्ड एट द एंड ऑफ द शाफ्ट that is rotated by means of motor. Any number of blades may be used, but three blade design is most common. Propeller is quite small and compared to size of the vessel. इसका ratio of the diameter between propeller container 1:20 रहता है, पर इसकी ऑपरेशनल स्पीड आप देख सकते हैं काफी अच्छी है, that is 8000 rpm rotation per minute. Compensate for the size and produce efficient mixing in case of low viscous fluids. ये low viscous fluids को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. ऐसे फ्लूइड्स, ऐसे लिक्विड जिनकी विस्कोसिटी कम होती है, उनको आप इजीली मिक्स कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द प्रोपेलर. वर्किंग देखेंगे तो मटेरियल टू बी मिक्स्ड इज टेकन इन अ वेसल एंड प्रोपेलर बियरिंग शाफ्ट इज इंसर्टेड. The angle blades of the propeller cause circulation of the liquid in both axial and radial direction, ensuring good bulk transport but low shearing force. It can be installed in number of ways. ठीक है. Advantages: it can be used when high mixing capacity is required, effective for liquids having maximum viscosity of 2 pascals. इस बात को ध्यान में रखना हमें. और slurries up to 10% of solids only. Effective gas liquid dispersion is possible at laboratory scale. Examples देखें, multivitamin elixirs जितने भी होते हैं, disinfectant solution, these are prepared by using propellers. Disadvantages: जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि विस्कोसिटी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है, इन मिक्सिंग. तो अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, अबव 5 पास्कल, जैसे ग्लिसरीन है या कैस्टर ऑयल है, तो वहां पे प्रोपेलर्स का यूज नहीं करेंगे अपन. एंड द सेंट्रली माउंटेड वर्टिकल प्रोपेलर प्रोड्यूस वर्टेक्स. वर्टेक्स फॉर्मुलेशन होता है जिसकी वजह से प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती. व्हाट इज वर्टेक्स फॉर्मुलेशन? क्या कैसे फॉर्म होता है वर्टेक्स? वर्टेक्स इज अ powerful circular motion moving mass of water or wind that can draw object into its hollow, which may result in air entrapped and bubble formation. As you can see how it is formed. So in an unbaffled tank, a vortex is produced due to the centrifugal force on the rotating liquid. This creates a swirling motion in the liquid, and the surface tends to go upward near the vessel rim and downward near the shaft. तो एक V shape का surface formed होता है जिसे हम vortex कहते हैं. ठीक है. Reasons क्यों होता है vortex formation? If the shaft is placed symmetrically in the tank, इसकी वजह से होता है. If the blades of turbines are arranged perpendicular to the central shaft, at high speeds पे vortex form होगा, and unbaffled tank होगा तो वहां पे vortex form होगा. Prevention के लिए हम क्या करेंगे? Impeller should be in any one of the following position to avoid the vortex. पहला off central, ठीक है,
जैसे कि ये ऑफ सेंट्रल हो गया, इंक्लाइंड, दिस इज इंक्लाइंड, साइड एंटरिंग, ठीक है, एंड शुड बी डीप इन द लिक्विड। अगर ये चार चीजें आप कंप्लाई करोगे तो देयर विल बी नो वर्टेक्स फॉर्मेशन। ओके, baffled container should be used. baffled container से क्या होता है, in such case impeller can be mounted vertically at the center, ठीक है। इस मतलब इस प्रोसेस से या इस मेथड से आप वर्टेक्स फॉर्मेशन को रोक सकते हो। नेक्स्ट आते हैं पुल पुश प्रोपेलर्स, two or more propeller of opposite angles or pitch are mounted on the same shaft so that the rotatory effects are in opposite direction, cancel each other effect, so will not produce circulatory flow or no vortex will be there. The bottom impeller is placed about one impeller diameter above the bottom of the tank. It creates zone of high turbulence. नेक्स्ट आता है टर्बाइन मिक्सर्स, जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे इसका। अ टर्बाइन कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क इम्पेलर विच आर नंबर ऑफ शॉर्ट वर्टिकल ब्लेड्स आर अटैच, जैसे कि आप देख सकते हो नंबर ऑफ शॉर्ट वर्टिकल ब्लेड्स आर अटैच। ब्लेड्स में भी स्ट्रेट और कर्व, ये ब्लेड्स स्ट्रेट भी हो सकते हैं लाइक दिस और कर्व्ड भी हो सकते हैं लाइक दिस। द ब्लेड्स आर सराउंडेड बाय परफोरेटेड इनर एंड आउटर डिफ्यूजिंग रिंग। The diameter of the turbine ranges from 30 to 50% of the diameter of the vessel. Working देखो, used in similar manner as that of impeller. However, it has rotated at somewhat small speed, जो कि 50 से 200 rpm, जबकि propeller की speed जो थी वो 8000 rpm तक थी। Flat blade turbines produce radial and tangential flow, but as the speed increases, radial flow dominates. जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो रेडियल फ्लो जो होगा वो बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू टेंजेंटियल फ्लो। Fixed blade turbine produces axial flow. Near the impeller zone of rapid currents, high turbulence and intense shear is observed. Shear produced by turbines can be further enhanced using a diffuser ring. ठीक है, diffuser ring क्या है? It increases the shear force and liquid passes through the perforations, reducing rotational swirling and vortexing. So this is how it works. Advantages: it gives a greater shearing force than propellers. Effective for high viscous liquids, ठीक है, up to 7 pascal, जबकि propellers only up to 2 pascals थे, maximum to 5 pascals. In low viscous materials of large volume, turbine create a strong current with spread throughout the tank, destroying the segment pockets. They can handle slurries with 50% of solid, जबकि propellers only 10% of slurry को 10% of solid वाली slurry को ही handle कर पा रहे थे. Turbines are suitable for liquids for large volume and high viscosity if tank is baffled. Next आते हैं paddle mixers. Paddles are agitators consisting of usually flat blades attached to a vertical shaft and normally operated at low speed. The blades have a large surface area in relation to the tank in which they rotate, so they can be used effectively. Primarily, paddle mixer जो होते हैं, they produce tangential flow and somewhat radial flow, but no axial flow is seen with the paddle mixers. Paddles जो होते हैं for more viscous liquids have a number of blades which are shaped in such a way to fit closely to the surface of the vessel, जिससे dead spots नहीं form होते या deposit solids नहीं होते. At very low speed, it gives mild agitation in unbaffled tank, but as the high speed baffles are necessary to avoid swirling and vortexing. अल्टीमेटली अगर आप बैफल टैंक का यूज करोगे तो जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं स्विरलिंग की और वॉर्टेक्सिंग की वो ओवरकम हो सकती है। टाइप्स ऑफ पैडल मिक्सर्स की बात करें तो मेनली ये 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आता है सिंपल पैडल मिक्सर, दूसरा आता है प्लेनेटरी मोशन मिक्सर, तीसरा आता है गेट मिक्सर, चौथा आता है स्टेशनरी पैडल मिक्सर। प्लेनेटरी मोशन मिक्सर की बात करेंगे तो स्मॉल पैडल रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस बट ट्रेवल ऑल्सो इन द सर्कुलर पाथ, ठीक है, around in the mixing vessel. It is used for more viscous liquid. Gate mixer जो होता है, it is simple paddle but very large in diameter. Stationary paddle mixer, it is used for mixing of solid with viscous liquid. Sigma plate mixer इसका एक improved form है. Use of paddles. Paddle are used in manufacturing of antacid suspensions की बात करें, अगर इन pectin related purgatives की बात करें, antidiarrheal mixtures की बात करें, इन केसेस में ये paddles का यूज किया जाता है. सो यूज ऑफ पेडल्स की बात करेंगे तो जब पेडल्स को मेनली यूज किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंटासिड सस्पेंशंस, अगर इन पेक्टिन रिलेटेड पॉजिटिव्स एंड एंटी डायरियल मिक्सचर जैसे कि विस्मथ केलिन मिक्सर होगा, उसके लिए आप पेडल्स का यूज करेंगे फॉर मिक्सिंग पर्पस.
Advantages, vortex formation is not possible, ठीक है. Disadvantages, mixing of suspension is पुअर सो दैट, तो इसीलिए हम बैफल टैंक का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है. इट्स नेसेसरी टू यूज बैफल टैंक्स. नेक्स्ट आता है एयर जेट्स. एयर जेट्स और अदर इनर्ट गैस जेट्स आर इफेक्टिवली यूज फॉर मिक्सिंग पर्पस विथ फ्लूइड ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर्स. हैविंग लो विस्कोसिटी, नो नॉन फोमिंग होने चाहिए फ्लूइड्स, नॉन रिएक्टिव होने चाहिए और नॉन वोलेटाइल होने चाहिए. अगर ये कंडीशन कंप्लाई हो रही है तो यू कैन यूज एयर जेट फॉर मिक्सिंग. प्रिंसिपल आप देखोगे, व्हेन कंप्रेस्ड एयर jet or suitable gas is allowed to pass at high pressure from the inlet provided at the bottom of the tank, air bubbles are formed in liquid phase. This you can see. This causes buoyancy of the bubbles which lifts the liquid, okay, from bottom to top of the vessel. The liquid flows down from the periphery of the vessel and enter from the bottom due to suction effect. The intense turbulence generated by jet produces intimate mixing. Fluid jets की बात करेंगे. In this device, the pumping operation is used to transfer the liquid into the mixing tank. Mechanism देखते हैं इसका. In this case, the fluids are pumped through nozzle, which permits good circulation of material through the tank. The fluid jets in this operation behaves like propellers. In that they produce turbulent flow produce होता है in the direction of their axis, while they differ from propeller because they don't produce tangential flow themselves. They may also operate simply by pumping the liquid from the tank and back into the tank through the jet. Continuous mixing can be accomplished in two ways: by using tubes or pipes and by using mixing chambers. Tube type या pipe type mixer की जब हम बात करेंगे, in this method the material flows through the tube or pipe and there is a very little backflow. Baffles, rod or combination of these may be placed in the tubes or pipe to enhance mixing efficiency. Mixing in such system mainly occurs through mass transport in direction normal to that of primary flow. फिर आती चैम्बर मिक्सिंग. मिक्सिंग चैम्बर का आप यूज करोगे फॉर एज अ कंटिन्यूअस मिक्सिंग इक्विपमेंट. इसके साथ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि देयर इज डिफिकल्टी इन द कंट्रोलिंग द इनपुट रेट एंड फ्लक्चुएशन. Fluctuation is the composition of final mixture is greatly reduced by dilation effect of the material contained in the chamber. It may consist of baffled pipe or an empty chamber. Liquid may be mixed or passed through the pipe or chamber. Mixing take place होती है as in a bulk transport mechanism से. Power supply itself जो पंप रहता है वो accomplish करवाता है मिक्सिंग को. और for effective mixing, controlling the feed rate is essential. फिर आता है पाउडर मिक्सिंग. Powder mixing may be regarded as an operation in which two or more than two solid substances in particulate form intermingled in mixture by continuous movement of particles. It is an example of neutral mixture and is one of the most common operation employed during the preparation of different formulation like powder, tablet or capsules. मैकेनिज्म की बात करें, कन्वेक्टिव मिक्सिंग, शियर मिक्सिंग, डिफ्यूजिंग मिक्सिंग. तो पहले आती है कन्वेक्टिव मिक्सिंग. It is also called bulk transport. It takes place by transferring the part of material from one location to another location of the system by means of blades or pedals of the equipment. Shear mixing. This type of mixing occurs when a layer of material flows over another layer, resulting in the layers moving at different speed and therefore mixing at the layer interface. It occurs when the removal of mass of the convective mixing creates an unstable shear slip plane which causes the powder bed to collapse. The action of the mixture induces velocity gradient with the powder bed. Diffusive mixing की जब हम बात करेंगे, it is a mechanism occurs by random movement of the particle within a powder bed and causes them to change their relative position in relation to one another. जब powder bed को force किया जाता है to move, it will dilate. This occurs because powder particles become less tightly packed and there is an increase in the air spaces voids between them. So there is the potential for the powder particles to pass through the void space created under gravitational force or by force movement. ठीक है. Equipments की बात करें तो solid mixing के लिए we have classified equipments into three types: tumbling mixers, high shear mixer और granulator and agitator mixers. Agitator mixer को हमने further classify किया गया into three types: river mixer, planetary mixer and Notta mixer. Tumbling या shear mixer की जब हम बात करेंगे तो it is the type of mixture movement of the whole mixture is responsible for mixing action.
कंस्ट्रक्शन ये बना होता है मेटालिक वेसल का, which are rotated on the horizontal axis at the optimum speed. जो मिक्सिंग वेसल है वो स्टेनलेस स्टील की है. The door is usually lined with rubber, which provides a perfect seal after closure. As you can see, tumbling mixture are available in variety of size and shape. इसमें Y cone blender आता है, cubical blender आता है, double cone and twin shell. This is a Y cone, this is a rotating cube, ये double cone है, ये twin shell है. वर्किंग, जिस चीज को हमें मिक्स करना है, जिस मटेरियल को मिक्स करना है, उसे हम उस चेम्बर में डालेंगे, उसको अलाउ करेंगे रोटेट करने के लिए. रोटेशन और स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर मिक्सिंग ना हाई स्पीड पे होगी ना लो स्पीड पे होगी. देयर शुड बी ऑप्टिमम स्पीड फॉर मिक्सिंग. सो ऑप्टिमम स्पीड इज रिक्वायर्ड, इट इज 30 to 100 RPM. ठीक है. मिक्सिंग जो होगी इट इज बाय कन्वेक्टिव मैकेनिज्म. ठीक. इसके अलावा यू कैन यूज व्हेन द बेड tumbles and dilates, allowing the particles to move downward under the gravitational force. डिफ्यूजिंग मिक्सिंग भी होती है, डिफ्यूजिंग मिक्सिंग जिसे हम कहते हैं. एडवांटेजेस देखें तो गुड फॉर फ्री फ्लोइंग पाउडर्स, मिक्स अप्रोक्सीमेटली 50 kg और 100 kg तक, लार्ज स्केल स्मॉल स्केल. Can be used to produce ordered mixtures, used in blending of lubricant, gradient or external disintegrant. Disadvantage, less effective for cohesive या poorly flowing liquids. Segregation की प्रॉब्लम आ सकती है उस केस में जब पार्टिकल साइज वेरी करेगा. ठीक. फिर आते हैं shear high shear mixer granulator. So this I will be continuing in the next lecture. Thank you for listening patiently, and on the behalf of Sage Group of Institutions, I thank you all for giving your valuable time. Thank you and have a nice day.